मकतब फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के तावन के बगैर। मुझे आप नहीं, आप खुद से जुदा कर सकते, कभी नहीं जुदा कर सकते। मैं हुकूमत में रहूं न रहूं, और आप मुझे अलहदा नहीं कर सकते। आप अपने देहातों से, अपने घरों से, अपनी झुग्गियों से, अपने मकानों से, अपने खानदान से, अपने बच्चों से। न मैं आपके बच्चों से और आपके खानदान से अलहदा हो सकता हूं, जुदा हो सकता हूं, न आप मुझसे जुदा हो सकते। हमारा लगन ऐसा है, ये लगन कट नहीं सकती, ये लगन किसी सूरत में नहीं कट सकती। ये लगन एक तारीखी लगन, इस लगन पर एक मोहर आ चुकी है, एक जबरदस्त मोहर आ चुकी है। इस लगन को किसी सूरत में कोई शख्स, कोई जमात अंदरूनी और बैरूनी ताकत नहीं काट सकती। ये मेरा ईमान है। मैं हुकूमत में रहूं न रहूं, मैं मर जाऊं न मर जाऊं, ये फैसला है, ये आखिरी फैसला है पाकिस्तान की अवाम का और मेरा। अब सदर पाकिस्तान ने इस पर अपनी दस्तखत सब कर दिए हैं और इस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले अवामी इस्लामी जमहूरी वफाकी और पार्लिमानी आइन की तौसीक हो गई है। The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is the Constitution of the people of Pakistan, and they are the best suited to speak for it. आप देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में, 90 साल का मसला इसी दौर में, इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार मीर कायम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप। आज एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी यूरोप के प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो एक ऐसे लीडर को कि जो जमहूरियत के फाउंडर थे, जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ द नेशन थे, पाकिस्तान के बानी थे, उसी तरह शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो एटम बम के बानी, आयन के बानी, आयन के खालिक, और एक लंबी लिस्ट है कि जहाँ से भी आप एक अच्छा काम निकालेंगे, तारीखी काम निकालेंगे, आगे से भुट्टो साहब का नाम निकलेगा। और ये हकीकत भी है कि हर शख्स कहता है जी भुट्टो भुट्टो थे, चाहे वो उनके मुखालिफ भी हैं। तो क्यों ना हम पाकिस्तानी होने का सबूत दें, ये अपनी छोटी मोटी रंजिशें एक साइड पे रखें और उनके तारीखी कामों की वजह से उन्हें खराज अकीदत पेश करें। भुट्टो का नाम तो बताबे जावेदान है, ता क़यामत रहेगा। वो किसानों, हारियों, मजदूरों और पिछे हुए तबके के एक बहुत बड़े लीडर थे, और उन्होंने अवाम को वो आवाज़ दी, वो सोच दी कि जिसकी वजह से आज जमहूरियत के लिए और आइन के लिए अवाम उठ खड़ी हुई है, अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी हुई है। तो ऐसे लीडर्स को जिंदा कौमें हमेशा याद रखती हैं और फख्री अंदाज में उनका नाम लेती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद, जिए भुट्टो। I've got to say to the Prime Minister that thank God he wasn't the Democratic candidate in New York. I've known a lot of statesmen who were politicians. And I've known a lot of politicians who want to be statesmen. But this is the greatest combination of both that I've seen in a long time. Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history, in every way and in every form. We had some useful discussions with Mr. Heath. Britain can do a great deal. Dwindling in the sense that unless there is communications between the people and the government,
you will not be able to find a political rehabilitation. That can only come once there is a restoration of a dialogue. That can only come by a political regime, by civilians, those who have been charged with the people to look after their affairs, those in whom the people repose confidence, those who do not carry a gun in their hands. But most of all, I'd like to speak to the students, appeal to them, the younger generation that was ever so kind to me. This is a generation which I adore, and I'm terribly fond of this generation. I can never forget that the youth of Pakistan gave me unanimous support when I left Ayub Khan's government in 1966. I had the unanimous support of the students of this country. And believe me, in my whole life, I have never considered any achievement greater than the achievement I felt when the whole of the youth of Pakistan rallied round me. That was a great sense of exaltation. And I tell you that I miss those days. The point is, I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. I thank you very much. جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں، میں ایک نہیں ہوں، ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں، دوسرا آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا ہوں۔ میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہے اس ملک، میں نے ملک میں عوام کی ذہن میں تبدیلی لائی، میں خود ذمہ دار ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس حد تک میں نے کسانوں اور مظاہروں اور ہاریوں کی ذہنیت میں تبدیلی لائی۔ یہ بہت بڑی فتح ہے، اور بھی اگر اصلاحات نہ ہوتے، یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے عوام مزدوروں کے ساتھ۔ میں عوام کی پیدائش ہوں، عوام کی طاقت نے مجھے اس منزل پر پہنچایا ہے، میں عوام سے دور کیسے ہو سکتا ہوں؟ عوام اور میرے درمیان میں اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے، خوشبو پھول سے جدا ہو سکتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو عوام سے دور ہو سکتا ہے۔ آج میں بڑی جرأت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ قانونی طریقے سے فوجی نظام کو خاتمہ آج ہو رہا ہے۔ یہ فیصلے میرے غریبوں، یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں، میرے مزدور بھائیوں، میرے محنت کا شوام، میرے بزرگ دوستوں، یہ فیصلے نہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے، نہ اندرا گاندھی کو کرنے پڑیں گے، یہ فیصلے نہ پنڈت کو کرنے پڑیں گے، نہ سردار کو کرنے پڑیں گے، نہ صاحب کو کرنے پڑیں گے، نہ سیٹھ کو کرنے پڑیں گے، یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو، غیور عوام کو، بہادر عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ قوم بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے۔ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. My country hearkens for me.
Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. Denda awaz zamana hai, denda awaz zamana, har putto na